मेरा नाम मुदस्सिर भट्ट है और आई एम दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ मडटून्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स। आज के दिन मैं जो हूँ थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट चीज़ पे आ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ मोर ऑफ अ हाउ टू ड्रॉ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हम जो है वीडियोस बना रहे हैं कुछ कि जिसमें हम ज़रा देखें कि हम ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है यूट्यूब के ऊपर आपको जो है बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें अंग्रेज़ी से भरे हुए एक्सपेरिमेंटेशनल आर्ट वर्क होता है और बहुत सारी आर्ट टेक्निक्स बताई हुई होती हैं। तो ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि उर्दू के अंदर या थोड़ा बहुत मिक्स ऑफ पंजाबी में मैं आपको बताऊं कि ड्राइंग कैसे की जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी आनी चाहिए, डजेंट हैव टू बी कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने से पहले थोड़ा बहुत जो है अपना इक्विपमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ आमतौर पे उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो है ये एक बड़ा कॉमन सा पेन है, इसको यूनिबॉल आई कहते हैं। ये जो है बड़ा फाइन पॉइंट पेन होता है और ये जेल टिप होती है इसकी, मेरे ख्याल से जेल टिप ही इसे कहते हैं। और ये जो है बहुत फाइन लाइंस बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इससे आप बड़ी स्ट्रेट लाइंस, बड़ी क्लियर कट बना सकते हैं। इससे पुराने टाइम्स में पेन निब्स यूज़ की जाती थी और पेन निब्स ये होता था कि आप उसको डिप करते थे, मसलन लाइक दे यूज्ड टू बी एन इंक पॉट, और उसके अंदर जनाब बहुत ज़्यादा जो है ना पेन निब्स होती थी और आप उसमें जाते थे और वो पेन निब जो है जनाब कोई इस तरह की ड्रॉ हुई हुई होती थी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप इस साइड पे दिखाएं देते कि उसका वो कवर पड़ा हुआ है, ये किसी बेस किसी टेबल के ऊपर या किसी साइड टेबल के ऊपर पड़ी होती थी और इसमें जनाब यहाँ तक जो है ना इंक भरी हुई होती थी। और निब जो है पेन्स की वो बहुत ही थिन सी लाइंड निब होती थी जो कि एंड में जाके ऐसे एक टिप सी बन जाती थी और उसके बीच में एक छोटा सा जो है ना इंसिजन होता था। तो आमतौर पे जो है लोग इंक्स के लिए ये इंक यूज़ करते थे इस तरह की एक पेन निब के साथ। और ये जो है सारी जो पेज है ये भरा होता था। ये एक और मैं मोटा मार्कर यूज़ करता हूँ, डॉलर का हॉलमार्क है। ये नॉर्मली जो सारा इक्विपमेंट है ये लाहौर शहर के अंदर जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसके मुताबिक है। मसलन इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कोई और शहर में अगर कोई वीडियो ये देख रहा होगा तो उसको जो है शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा क्योंकि एक स्कूल है जो कि इंग्लिश मीडियम है, एक स्कूल है जो उर्दू मीडियम है। तो आई ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मिक्स इन माय डिलीवरी, क्योंकि एक स्कूल है जो स्कार्सडेल का स्कूल है जहाँ पे मैं आई विल बी स्टार्टिंग टीचिंग इन अ फ्यू वीक्स। और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फैज़ घर। तो फैज़ घर के अंदर जो है उससे पहले मैंने जो है समर इंटर्नशिप क्लासेस कह लें या ड्राइंग क्लासेस शुरू करनी है। तो ये जो है उसके लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। तो दो पेन्स आई डिस्कस, टू पेन्स, एक यूनिबॉल आई, इट्स वाटर प्रूफ मीनिंग कि द इंक डजंट डिज़ोल्व एंड इट्स मेड बाय द फेमस कंपनी कॉल्ड मित्सुबिशी। दूसरा जो है डॉलर का हॉलमार्क पेन है, परमानेंट मार्कर है। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग वाइट बोर्ड मार्कर्स। उसके बाद ये कि हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं। पेंसिल इज़ बेसिकली अगर आपने मसलन कोई बंदे की आउटलाइन बनानी है, लेट्स से, तो उसकी आउटलाइन या जो इनिशियल स्केच होता है उसको बनाने के लिए ये बहुत यूज़फुल होती है।
और उसके बाद then you can always trace over it or give it some kind of an ink touch. Normally ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये Faber-Castell की है. Faber-Castell is a very expensive brand, but the pencil is very soft. मतलब इनकी जो सिक्का है इसका बहुत नरम होता है और it's very good for like sketching. You can use goldfish, you can use deer, लेकिन ये कि उसकी you won't get the good very smooth feel of it. And I'm using very light strokes to make the drawing, so it's not I'm drawing very dark, very strong and in like very thick lines. This is considered to be a bad practice. On the other hand, using light strokes and using a continuous line is a better practice. मसलन circle बना लें, line बना लें, arc बना लें, ये सारी चीज़ें जो हैं लाइट स्ट्रोक में बेहतर होती हैं. अब आई डोंट नो कि इफ़ दिस इज़ कमिंग ऑन कैमरा, लेकिन इफ़ आई ट्रेस ओवर दीज लाइन्स तो यू विल गेट द इम्प्रेशन कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, और ये जो है उस बंदे की जो मैंने स्केच बनाया उसकी वो आउटलाइन है. सो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है और उप्स ये भी हमने लाइंस मिस कर दी. सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस एज वेल. नाउ आई विल ट्राई टू यूज़ two different pens. These are Faber-Castell Pitt Artist Pens, ठीक है, और इनकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है. मसलन आप इसकी देखें, इसकी जो थिकनेस है वो मेरे ख्याल से आई थिंक ये इस पर लिखा हुआ नहीं है, बट आई थिंक इट्स 0.5, और इसकी थिकनेस जो है ये बहुत थिन लाइंस बनाता है. मतलब इसकी लाइंस ज़रा थिन है, ये लाइंस थोड़ी सी मोटी हैं, और इसके मुकाबले में आई थिंक ये 1 है, साइज़ 1 का पेन है, तो इसकी जो लाइंस हैं वो मोटी हैं. और इसमें आप थोड़ी सी वेरिएशन भी डाल सकते हैं. मतलब अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे तो द लाइंस विल बी थिकर. इफ़ यू होल्ड इट ऑन टू द साइड the lines will be thinner, or you can control the amount of thickness depending on. तो ये जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, this is called cross hatching, and or you can say in layman's terms it's also called hatching. मतलब अगर this is hatching, but अगर आप इसके opposing side पे इस तरह criss cross में lines बनाएंगे तो इसको कहते हैं cross hatching. There are different types of cross hatching. We'll discuss cross hatching अगले आने वाले chapters में. तो let's draw these arc lines जो हमने sketch की थी. तो आप देखेंगे इसमें जो है वेरिएशन है थिक और थिन लाइंस की इस पेन की निब के साथ. तो आप थोड़ा बहुत इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो लाइन की थिकनेस है वो क्या हो. So this is a little bit introduction about the pencils and pens and markers that I'm using. और this is another interesting pencil. ये इसको सिक्के वाली पेंसिल कहते हैं या जो लेड पेंसिल होती है. This comes from Staedtler. This is a Staedtler pencil, and it has a very long graphite lead cartridge, and you can sharpen it up normally by the end of this. इसको आप जो है अगर ले गए हैं और इसको थोड़ा सा रब इन करें तो ये शार्प हो जाती है. Here you go. तो ये this is now sharpened. You can then put it back and you can start working. So this was a little bit introduction about the equipment that we normally use for pens are concerned.
इसके बाद there is a very nice variety of very thick brush pens. ये जो हैं ज़रा थोड़े से इस मार्कर पेन से थोड़े से डिफरेंट हैं. दिस इज़ ऑल्सो फैबर कैस्टल, लेकिन ग्रेज डिफरेंट कलर ऑफ ग्रेज ये यूज़ करते हैं. मसलन दिस इज़ अ ब्रश पेन, यू कैन बेंड इट एंड यू कैन कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक. ठीक है. So this is a brush pen, you can control the thickness and the thinness of the stroke. Or this one is pure black, so if you want to just draw on top of this arc, it will come to something like this. So at the end you can always move quickly and swiftly and create an arc, very tapered edge. You can also draw very thin, so press more and you can get a thicker line, press less and you can get a very thin line, depending on what do you want to do with the lining. And we have another set of markers. This is again, I would recommend all of you who can get this marker set. This is called Faber-Castell Pitt Artist Manga pens. This is manga set. This is gray and this has a slight gray tone to it. You can see very clearly. Masalan, if I draw a very straight line and start shading it, or let's say if I shade the upper half of this cap, so this will be shaded in gray, and then I can always come back and shade it again, or I can even have some kind of ink stains at the edges of this ink bottle, or probably on top of the ink bottle the mouth of the ink bottle. We can have some kind of ridges and we can have some kind of shading that actually shows that this is open. So this is a little introduction to the art supplies. Now we will talk about basically what art is. Art is something that cannot be expressed. It's always evolving and it's very difficult to explain what art is. Art can be anything from something that you eat, to something that you draw, to something that you wear, to something that you go to school in. Like cars are also a work of art. So art is very it has a very broad terminology. So I guess we'll leave it at that and we'll move on to some finer things, some new things of how to describe. Okay, how can you describe art? This is a blank piece of paper. इसमें I think थोड़े बहुत ink splotches पड़े हुए हैं, but ignoring that, this is just a blank piece of paper. What you draw onto this piece of paper can be called art, and art has different value for different people. Some people might say that your art is very sought after, it's very expensive, मतलब it has a price. Some people will say कि it's worthless, मतलब कि so art की वैल्यू जो है वो उसके व्यूअर से डिफाइन होती है, कि वो व्यूअर जो है जो उसकी वैल्यू लगाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट. मतलब कि हाउ डू यू बिकम एन आर्टिस्ट, मतलब कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग आर्ट. सो नंबर 1 इज repetition. Now repetition is something, for example, you repeat what you do. Repetition means that, let's say, if you're drawing something, you constantly draw that thing
again and again and again and again and again. For example, if you're drawing a circle, so you draw a circle and then you draw another circle and then you keep on drawing and you keep on drawing, and eventually after a while, so for example, in the beginning your circle will look like this, something like this. It can be very crude, but eventually after you keep on repeating drawing a circle time and time again, it might look very good. So first is repetition, and I think मेरे ख्याल से repetition जो है is the best form of learning. Repetition का मतलब ये होता है कि repetition means कि you keep on repeating what you're drawing. Let's say for example, I'll use this marker to draw a shape. Let's say I draw a triangle. So you can draw a triangle like this, you can draw a triangle like this, you can draw a triangle like this. It's up to you. Again, the more you practice, the more you get better. Initially when you draw in repetition, you may start with something that looks like this or something that may not look like a triangle. Lekin after like a couple of 100 or 1,000 drawings of a triangle, you may draw a perfect triangle. You can even like not even lift the pen or the marker to draw a triangle. Same is the case कि if you keep on repeating with repetition, you can draw better. Like for example, if you're drawing a face, so you're drawing a face, some guy, you draw his hair and you draw his eyes, and he's got angry looking eyes, he's staring at you, and he's a bit thick eyebrows, and he's got a forehead, and you keep on drawing him with like angry big ears, and he's got like big hair. So you keep on drawing a face, and after like 200 faces you might get the face that you're looking for. And for the sake of just our own discussion, we are just drawing a face in repetition. So in repetition you draw a face. You can even draw something like this. So this is also a face, and it's not a realistic looking face, but still one can relate that this is a face because it has eyes, it has a smile. Normally noses are not necessary and even eyebrows are not necessary. The two basic things that are required is draw face is the shape of the face, the eyes, and a smile. It can be a frown, it can be very angry, it can be something like giggly, like big smiley teeth. So it's totally up to you. Now adding nose and eyebrows is something that comes later on, and it's really up to the person who's drawing to make that thing happen. Or this is the first type of drawing, or the practicing of कह लेंगे एक तरीक़ाकार है जिससे आप you can practice to draw. You keep on repeating what you see. Like for example, I'm just going to take another page, and for example,
if you're drawing a mug, so you're drawing this mug, and you draw the mouth of the mug, you draw the body of the mug, and then you draw the base of the mug, then you draw the handle of the mug. So this is a good looking mug. It can have tea, it can have coffee, it can have like shaving cream, like for example if you're shaving for the first time. But I guess one of my students might get that shave beard thing. The rest of the kids might be too young, so they might not be using shaving cream as of yet. But one of the class that I'm going to be teaching these days might have to shave. So it's totally up to you. So when you're drawing a mug, if you keep on repeating your drawing, after like 2 or 3 drawings, your drawing may improve very well further on. So it's up to you that the amount of times you repeat your drawing, you'll get better at drawing something. And it can be on different angles. For example, it can be at an angle that is at a height of some height, like you're looking at from some top angle. This is from right from the front or from the side, so it can be something like this, that you're looking the mug from the top, and there's, in this mug we have something like, I think, tea or coffee or something similar. So you can experiment with different angles for a mug. You can even draw an egg, for example. But all these things require repetition. So repetition is always a good example. The second thing that you can do to become a good artist or a student of the arts, because I think no one can become a master. The second thing that you can do become, and that's a type of art practice, is studying. So studying does not mean that you have to give an exam like oh, I learned art and this is the art, or you have to like learn read books or something. So when it comes to art, you don't have to read books. I mean, there will be people who will constantly say that reading books is very necessary. Studying is basically you're studying life, studying how people walk, studying how people look. So you're watching television, you're studying. You're in a park, you're sitting in a park, you're sitting on a bench, and you're looking at people passing you by. So you're actually studying them. So that's called studying. And studying, while you're studying, you're always using a sketchbook or a notebook to note down what those people are doing, and you're drawing on that sketch pad or sketchbook or notebook what those people are doing and walking by. Like for example, someone is walking and he has like let's say he's on a jog. So he's running and he's on a jog, and you're observing him and you're drawing him. So this is observation or studying life.
And this is always a very good way to improve on your drawing skills. I mean, जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी anatomy बेहतर करनी होती है, those who want to improve on their anatomy drawing skills like human form or body, they study. For example, this is also a form of studying, that you're looking at a mug that's in front of you and you're actually studying how it looks like. Or this is the second type of or form of art form that most artists utilize. It is always good to study from real life, because it gives you a perspective of actually improving on your art, and it also gives you the opportunity to draw from real life. I mean, जिन लोगों ने स्टडी किया है या ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा की है, उनको जो है फ्रॉम देयर ओन इमेजिनेशन ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं लगता. आई मीन, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ट स्टडीइंग, मतलब आर्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं repetition and studying can actually improve your drawing style. For example, I was not able to draw in my first class a mug. So in my first class, what I drew was something like this. I drew it like this, and then I did something like this. This was my first drawing, something similar like this. So for a first timer who comes to an art class, if you're drawing something like this and you're underconfident, you think that you're not going to become an artist, don't think like that. बिल्कुल इस तरह ना सोचो कि तुम जो आर्टिस्ट नहीं बन सकते, बिकॉज सबसे पहले जो आर्ट क्लास के अंदर ड्राइंग्स होती हैं वो बिल्कुल इस तरह होती हैं. कुछ लोग तो जो हैं मेरे ख्याल से ड्राइंग भी नहीं कर सकते, एंड दे जस्ट ड्रू समथिंग लाइक दिस, ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. तो इट्स not very difficult to come to something like this after you've gone through the repetition process and the studying observation process. I mean, drawing some book shape from just your imagination is always going to be helpful if you've actually gone through these two steps. So third form of drawing, I'm getting low on pages, so I'm just going to use the back side of this page. And okay, so we have some more page, we have another page. अच्छा, so इसमें ये होता है कि थर्ड फॉर्म को आप कहते हैं imagination. Imagination के अंदर ये होता है कि you're drawing whatever you're thinking about. Like, let's say you're thinking about a pattern and it comes in random ideas, and this is just like a pattern and it keeps on growing, and you keep on drawing this pattern and it eventually becomes something very big, and then maybe you might actually put it at some art gallery and sell it for something. But imagination also has something like, let's say कि oh, I'm thinking about कि एक बंदा बैठा हुआ है कहीं पे. वो बंदा कैसे बैठा हुआ है? बंदा जो है वो स्क्वाट करके बैठा हुआ है. So you're drawing a leg, you're drawing a torso, ठीक है, you're drawing his hips, and he's sitting like a frog, ठीक है. So you're drawing him sitting as like a frog. So you can't draw if you're not good with imagination. So ये एक आर्ट जो है एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है, और लोगों की जो है रेपिटिशन उस ड्राइंग या उस आर्ट उस ऑब्जेक्ट को बनाने की वो बहुत ज़रूरी होती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने मतलब इस तरह
स्क्वाट करके बैठा हुआ है and he's like his hands are down here somewhere, so he's sitting in a position like a frog. So ये जो है it always comes to imagination, कि जब तक आपकी imagination नहीं होगी you can't draw. There are a lot of artists that I know who are very good artists. They can like draw exceptional anatomy drawings, मतलब कि from observation or from anatomy drawings or people posing for them. लेकिन जब बात आती है कि मॉडल के बगैर उसको ड्रॉ करो तो they can't do it. So imagination is very, very important. So these are the three basic concepts. One is repetition. Let me write it down again. The first is repetition. The second is observation. Or also known as study. And the third one is imagination. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अब इसके बाद हम अगली दफ़ा मिलेंगे. Hope to see you guys here. Allah Hafiz.